way, both from abroad and oxygen supplies from different parts of the country, the situation at the country's hospitals still remains grim. Long lines for virtually every aspect of healthcare, from looking for medicines to trying to get admitted to trying to find oxygen to even trying to cremate a loved one. Massive queues, lines, and a very, very tough situation still presenting itself to our country. India's endless wait, where long, agonizing lines have become a defining part of the common citizen's day. From oxygen to ambulances to medicines to even crematoriums. The crushing wait from life to death, breaking India's spirit and testing citizens to the maximum. Let's start with the immediate crisis over oxygen. Long lines of ambulances sitting outside Delhi's Avail hospital with empty oxygen cylinders. Ambulance drivers tell the tale of dying patients. निराला बिहार के अंदर ऑक्सीजन का प्लांट है, वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी पड़ी है कि कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है. Then the snaking lines outside hospitals, where admitting patients has become the most difficult task on hand. Like this hospital in Gujarat, where tempers have been flying. एम्बुलेंस के लिए भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. तो आपको दिखाते हैं कि जो मरीज है, मरीज को अंदर ही सारी ट्रीटमेंट दी जा रही है ताकि कम से कम जब तक उनको अस्पताल में बेड मिले वो ठीक रहे, उनका जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे बना रहे, उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है एम्बुलेंस के अंदर ही. Across cities and towns, the lines for COVID drugs in short supply have also been building up. Fueled by panic on WhatsApp forwards, people have been lining up to stock up on drugs even before actually needing them. People are very upset and distressed because major medicines like remdesivir are not available, but even medicines like Fabiflu is not available. Then there's the bumper-to-bumper ambulance lines in different cities, a terrifying, defining image of just how overwhelmed hospitals are. These are lines in which people are being treated and dying in. We are outside this hospital. You can see a plethora of ambulances which are just waiting to be pressed into service. क्या हाल है अभी? कितने लोगों को सुबह से कल रात से कितने लोगों को लाना पड़ा हॉस्पिटल? अरे मैडम जी क्या करें, गाड़ियाँ ही कम पड़ जाती हैं, हम ही लोग लगे पड़े हैं, प्राइवेट वाले हम लोग एम्बुलेंस वाले. अच्छा. तो बहुत कोई जाते ही नहीं, तो हम ही लोग जाना पड़ रहा है बार बार. क्या सिचुएशन है, क्या हाल है? बहुत कंडीशन खराब है, बहुत केसेस हो गए हैं. अब तो डर लगने लगा मैडम जी काम करते करते. यहाँ आते हैं ऑक्सीजन नहीं मिल रही, भैया आप करो कुछ, हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ. गाड़ी में बैठ जाओ, छोड़ देंगे दूसरी जगह, वहाँ नहीं लेगा तो फिर कहाँ जाएंगे वो बेचारे. रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, क्या करें. And the most heartbreaking lines of all, lines outside overwhelmed crematoriums where the dead cannot be cremated fast enough to keep up with the backlog. ये लखनऊ का बैकुंठ धाम है, जहाँ के पीछे हिस्से से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिन रात यहाँ पर धू-धू करके लाशें जलती रहती हैं. ये जो जलती हुई लाशें दिख रही हैं, ये उन शेड्स के अंदर नहीं है जहाँ पर आमतौर पर जलाया जाता है, लेकिन इतनी ज्यादा लाशें होने के बाद खुले में लोग पीछे जलाने के लिए मजबूर हो गए. So overwhelmed are they by the constant lines that public parks are having to be used to consign the COVID dead to the flames. सराय काले खां में बने शमशान घाट के बगल में एक पार्क है, वहां पर मौजूद हूं. राजधानी दिल्ली का सच यही है कि आप देख पा रहे हैं पार्क में बकायदा जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया जा रहा है. इन्हीं प्लेटफॉर्म पर अब जो है लोगों का अंतिम संस्कार होगा. India's endless lines, the paralyzing anxiety, a country waiting and wondering just when these lines will no longer be necessary. Bureau Report, India Today.